मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुकी है, सियासी ताकत का मुजाहरा कर चुकी है और आज मुल्तान का रुख किया गया है और मुल्तान में इस वक्त जलसे का आगाज हो चुका है और अब से कुछ ही लम्हों बाद बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। दिन भर चेहरे की नमी कम होती है और चेहरा मुरझा जाता है, इसलिए ग्लो एंड लवली की नई हाइड्रा ग्लो। इसमें है रोज सीरम जो चिल्ड को अंदर से नमी दे ताकि चेहरे को मिले खिला खिला ग्लो। जब नमी मिले ग्लो खिले। ग्लो एंड लवली हाइड्रा ग्लो। एक खा लीजिए, दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नरम और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। भाई इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तूत स्याह प्लस मलट्ठी लेके आना। बिलीनी हेयर कलर, बाल डैमेज करता नहीं, स्किन पे चढ़ता नहीं। बिलीनी हेयर कलर, हर रंग में लगो यंग। Experience the luxury of Facile Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Facile Sanitary for an elegant lifestyle. मुझे पढ़ना लिखना है, इल्म की राह पर हमको यूं ही चलना है। I love the educators. I love the Educators, a project of Beacon House. पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा गया, मुल्क का क्या हल कर दिया। ना बिजली है ना गैस है, तब्दीली की वजह से रोटी और बिजली महंगी हो गई। नवाज शरीफ का बोरेवाला में जलसे से खिताब, कहा वादा करता हूँ नून लीग आएगी, महंगाई को मिटाएगी, गैस घर घर मिलेगी। हुकूमत खत्म न की जाती तो कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। बोरेवाला से मोटरवे गुजारने का वादा, एयरपोर्ट बनाने का भी इंदिया। मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं, जहां से आए हैं वहां स्कूलों में जानवर बंधे हुए हैं। मरियम नवाज के एक बार फिर बिलावल पर लफ्जी वार, कहा मुखालिफिन को जलसे करने में मुश्किल पेश आती है, हर जगह उन्हें नून लीग के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। नवाज शरीफ के काम गिनवाना शुरू करूं तो अगले दिन शाम हो जाएगी। तकलीफों में घिरे अवाम नवाज शरीफ को आवाजें दे रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इख्तियारात इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 193 के तहत दिए गए इंतखाबी नताइज के ऐलान तक हासिल रहेंगे। अफसरान खिलाफ ज़ाब्ता किसी भी अमल का फौरी नोटिस लेने के मजाज होंगे। चीन $2 अरब कर्ज एक साल के लिए मौखर करे, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की दरख्वास्त। चीनी हम मनसब को खत लिख दिया, $2 अरब का डिपॉजिट टाइम 23 मार्च को मुकम्मल होगा। वजारत खजाना और चीनी हुक्काम में राब्ते, कर्ज जल्द रोल ओवर होने का इम्कान। IMF की पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली की पेशगोई, रवा माली साल FBR टैक्स वसूली 9,415 अरब रुपए रहने का इम्कान। IMF के मुताबिक वसूलियों का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। नए साल में टैक्स वसूली में 1590 अरब रुपए इजाफे का तखमीना है। परवेज़ इलाही इंतखाबात के लिए अहल करार, कागजात मुस्तरद करने के रिटर्निंग अफसर, ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, इंतखाबी निशान नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। परवेज़ इलाही हल्का PP 32 से इंतखाबात लड़ सकेंगे।
इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, एहतिसाब आवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, बता दें कहाँ लिखा है मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया, बैलेट पेपर्स का काम मुकम्मल हो चुका है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, अदालती फैसले पर अमल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। MQM ने जनरल ज़िया की गोद में जन्म लिया, पैगाम देना चाहता हूँ, शहर का अमन ख़राब करना नहीं चाहते, हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। वक़ार मेहदी की MQM क़यादत को ललकार, कहा MQM बौखलाहट का शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ गिरी हुई ज़ुबान इस्तेमाल की गई, PP के दफातर पर हमले किए गए, कारकुनों पर हमले हो रहे हैं। भारत के यौम जमहूरिया पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों का यौम सियाह, हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूज़ावादी में मुकम्मल हड़ताल। आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारत मुखालिफ मुजाहरे और एहतजाजी रैलियाँ। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़िला कचहरी से चौक शहीदा तक रैली। सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क में खुश्क सर्दी का खात्मा, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कबल और नवाह में हल्की बर्फबारी ने चांदी बिखेर दी। महकमा मौसमियात की आज से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बराह रास्त आप देख सकते हैं आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका का इसराइल के खिलाफ मुकदमा। मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं। Court its decision on the request for indication of provisional measures submitted by South Africa in the case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip, South Africa versus Israel. Judge Robinson, who duly participated in both the deliberation and the final vote, is, for reasons made known to me, unable to take his seat on the bench today. I would like to welcome the eminent representatives of the Republic of South Africa and the State of Israel who are in the Great Hall of Justice today. In particular, I recognize the presence of Her Excellency, Ms. Naledi Pandor, Minister of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa. I recall that on 29 December 2023, South Africa filed in the Registry of the Court an application instituting proceedings against Israel concerning alleged violations in the Gaza Strip of obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, to which I shall refer as the Genocide Convention or the Convention. The application of South Africa contained a request for the indication of provisional measures submitted with reference to Article 41 of the statute and to Articles 73, 74, and 75 of the Rules of Court. In accordance with the usual practice, I shall not read the introductory paragraphs of the order which set out the procedural history of the case. I shall also omit or summarize some other paragraphs. I shall therefore begin the reading of the order at paragraph 13. In the order, the Court begins by recalling the immediate context in which the present case came before it. It observes that on 7 October 2023, Hamas and other armed groups present in the Gaza Strip carried out an attack in Israel, killing more than 1,200 persons, injuring thousands, and abducting some 240 people, many of whom continue to be held hostage. Following this attack, Israel launched a large-scale military operation in Gaza by land, air, and sea, which is causing massive civilian casualties, extensive destruction of civilian infrastructure, and the displacement of the overwhelming majority of the population in Gaza. The Court is acutely aware of the extent of the human tragedy that is unfolding in the region
and is deeply concerned about the continuing loss of life and human suffering. The ongoing conflict in Gaza has been addressed in the framework of several organs and specialized agencies of the United Nations. In particular, reservations have been adopted by the General Assembly and the Security Council of the United Nations, referring to many aspects of the conflict. The scope of the present case submitted to the court, however, is limited, as South Africa has instituted these proceedings under the Genocide Convention. The court then turns to the conditions needed to be fulfilled in order for it to indicate provisional measures. With respect to the question of prima facie jurisdiction, the court observes that it may indicate provisional measures only if the provisions relied on by the applicant appear prima facie to afford a basis on which its jurisdiction could be founded, but it need not satisfy itself in a definitive manner that it has jurisdiction as regards the merits of the case. In the present case, South Africa seeks to found the jurisdiction of the court on Article 36, Paragraph 1 of the Statute of the Court and on Article 9 of the Genocide Convention. The court must therefore first determine whether those provisions prima facie confer upon it jurisdiction to rule on the merits of the case, enabling it, if the other necessary conditions are fulfilled, to indicate provisional measures. Article 9 of the Genocide Convention provides, I quote, "Disputes between the contracting parties relating to the interpretation, application, or fulfillment of the present convention, including those relating to the responsibility of a state for genocide or for any of the other acts enumerated in Article 3, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute." End of quote. South Africa and Israel are both parties to the Genocide Convention, and neither of them has entered a reservation to Article 9 or any other provision of the Convention. The court then recalls that Article 9 of the Genocide Convention makes its jurisdiction conditional on the existence of a dispute relating to the interpretation, application, or fulfillment of the Convention. A dispute is a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or of interest between parties. In order for a dispute to exist, it must be shown that the claim of one party is positively opposed by the other. The two sides must hold clearly opposite views concerning the question of the performance or non-performance of certain international obligations. To determine whether a dispute exists in the present case, the court cannot limit itself to noting that one of the parties maintains the convention applies while the other denies it. Since South Africa has invoked as a basis for the court's jurisdiction the compromissory clause of the Genocide Convention, the court must also ascertain at the present stage of the proceedings whether it appears that the acts and omissions complained of by the applicant are capable of falling within the scope of that convention, ratio materiae. The court recalls that for purposes of deciding whether a dispute existed between the parties at the time of the filing of the application, it takes into account, in particular, any statements or documents exchanged between the parties, as well as any exchanges made in multilateral settings. In so doing, it pays special attention to the author of the statement or document, its intended or actual addressee, and its content. The existence of a dispute is a matter for objective determination by the court. It is a matter of substance, not a question of form or procedure. The court notes that South Africa issued public statements in various multilateral and bilateral settings in which it expressed its view that, in light of the nature, scope, and extent of Israel's military operations in Gaza, Israel's actions amounted to violations of its obligations under the Genocide Convention. For instance, at the resumed 10th Emergency Special Session of the United Nations General Assembly on 12 December 2023, at which Israel was represented, the South African representative to the United Nations stated that, I quote, "The events of the past 6 weeks in Gaza have illustrated that Israel is acting contrary to its obligations in terms of the Genocide Convention." End of quote. South Africa recalled this statement in its note verbal of 21 December 2023 to the Embassy of Israel in Pretoria.
The court notes that Israel dismissed any accusation of genocide in the context of the conflict in Gaza in a document published by the Israeli Ministry of Foreign Affairs on 6 December 2023, which was subsequently updated and reproduced on the website of the Israel Defense Forces on 15 December 2023 under the title, "The War Against Hamas, Answering Your Most Pressing Questions," stating that, I quote, "The accusation of genocide against Israel is not only wholly unfounded as a matter of fact and law, it is morally repugnant," end of quote. In the document, Israel also stated that, I quote, "The accusation of genocide is not just legally and factually incoherent, it is obscene, and that there was no valid basis in fact or law for the outrageous charge of genocide," end of quote. In light of the foregoing, the court considers that the parties appear to hold clearly opposite views as to whether certain